On December 15th, a peaceful protest started from Jamia Millia Islamia. It went ahead to Batla House and they reached Sukhdev Vihar. Near the community center of Sukhdev Vihar, there were barricades put on. The people of Batla House knew that if they touch the barricade, something like December 13th will happen. They will beat around people, they will fire tear gases. Then they moved from Sukhdev Vihar through a narrow line. The protesters were marching forward. I also went forward, and all I could see was tear gas shells and smokes coming out. ടിയർ ഗ്യാസ് കുടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആസ്മയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വീട്ടിനകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓടി കയറിയതും. പിന്നെ ഞാൻ ചന്ത, ആയിഷ, ഷെയ്നൊക്കെ ഓടി കയറിയത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ പോലീസ് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താതെ ആ വീട്ടിന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് 2 സെറ്റായിട്ട് വളയാണ് ഉണ്ടായത്. ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ അകത്ത് കയറ്റി എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തരാനും പറ്റിയില്ല. കാരണം അത്രയും ഭീതിജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് പോലീസ് പുറത്ത് വളർന്നിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചത്. I showed them both my ID cards. Like I have a student ID with me at the time, and a press card with me. My organization's press card with me. And I told them I'm a part of the press, and don't attack me. They were blatantly ignoring my claims, and they started to beat me. They started to tap their lathi on my legs, and for each step they started to beat me. And the police was brutally attacking everyone without considering it has to be a student, woman, men, old man or nothing. I think they wanted to make it a perspective of communal thing. Since the protest was not moving on that violent thing, they consciously, intentionally made it to be a violent thing. हम सारी स्लोगन्स बना रहे हैं, पोस्टर्स बना रहे हैं. थोड़ी देर बाद अचानक से एक ऑफिशियल आके हमें ये कहते हैं कैंपस के बाहर में कि अब आप लोग कैंपस के अंदर चले जाइए, क्योंकि बाहर का एरिया अब सेफ नहीं रहा. उन्हें खबर मिली थी कि बसेस वगैरह जला दी गई हैं. हम सब में इतनी भगदड़ मच गई थी, हमें समझ में नहीं आया हमें क्या करें. हमारे लिए उस वक्त ये था कि हमारा कैंपस जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ है, वो हमारा घर था. और क्योंकि वहाँ के जितने भी गार्ड्स थे उन्होंने ये इंश्योर किया था कि हमारी आई कार्ड देखने के बाद ही वो हमें एंट्री दे. हम कैंपस के अंदर चले गए. कैंपस के अंदर जाने के बाद इतनी अफरा तफरी हो रही थी, हमें कुछ समझ में नहीं आता. तब हमने देखा कि सेंट्रल कैंटीन के पीछे वाले एरिया से, जो भोपाल ग्राउंड है, वहाँ से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है. तब हमें समझ में आया कि बस में एक्चुअल में आग लग चुकी है. उस वक्त तक हम सारे टेंशन में आ चुके थे कि करें क्या. We ran towards the central library because we thought it's far enough. Tear gas shells might not come till there. I mean, who would imagine it getting inside the campus like that? टीयर गैस 1, 2, 3 नहीं, बहुत सारे टीयर गैस, मतलब कंटिन्यूअसली इधर से चारों तरफ से टीयर गैस चला दिए. और हम इकट्ठे होते कैंपस के सेंट्रल लाइब्रेरी में जाके रुक गए. इतनी देर बाद हमें एक अपनी क्लासमेट का वॉइस नोट मिला कि हम वॉशरूम में लाइब्रेरी में 3rd फ्लोर पे छुपे हुए हैं, बच रहे हैं, लाइट्स ऑफ है वहाँ पे, क्योंकि पुलिस वहाँ पे टीयर गैसिंग कर रही है, सबको मार रही है, प्लीज हमें बचा लो. As soon as we came inside the library, it was a very panicky situation because everyone who was sitting there studying
stood up and they were also very agitated what is happening, and we could hear the tear gas shells being lobbed everywhere. And we wanted to run, but there was only one exit to that place, and we couldn't run anywhere because that was where the tear gas were being lobbed at. We don't know where to go. It was pitch dark. We don't know what to do, and so we went to the first floor. I told my friends we could go to the first floor. Some of them went to the second floor. So the three of us, we went to the first floor along with I think around 50-60 people. We were so scared that we thought that, I mean, if they find us, they would be beating us like the same way they were beating the students outside. I actually called Hashmat, and when I was calling Hashmat, he was seeing police entering in some other rooms, and she was telling me, I'm scared, I'm stuck here, I don't know what to do. And I said, it will be alright. And she asked me, promise? And I couldn't actually promise that. When we saw that the lights in the research room started getting switched on, and we grew really panicky, and we saw police officers asking the students hiding behind the desk to come out. आप उस वक्त का मोमेंट का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हमारे ऊपर क्या बीत रही थी जब अपनी क्लास के फ्रेंड्स लोगों की कांपती हुई आवाज आपको सुनने को मिले और आपको ये नहीं पता चले कि आगे आपको उनको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा. आप नहीं अंदाजा लगा सकते इस चीज का. The entire Jamia is our home, and they're ruining everything in here. Whenever I want to find refuge, like silence and everything, I would go there, sit near the issue area, and I would just sit there, and I'd be at peace, because that library is very silent, and it's peaceful when it's silent. But this time the silence was deafening.